only 6 months left for the high-octane poll battle of Uttar Pradesh. The war of Jaans has dominated the election discourse and promises to become the big catchphrases in the lead-up to this big battle. After Yogi Adityanath's Abba Jaan Jibe at Samajwadi Party, Bhartiya Kisan Union leader Rakesh Tikait, one of the aspiring new players in the Uttar Pradesh battlefield, has trained his guns at Asaduddin Owaisi, calling him the BJP's Chacha Jaan. And this has already triggered a chain reaction of Jaans in the battlefield of Uttar Pradesh. Take a look. With big hopes of a grand entry, Hyderabad MP Asaduddin Owaisi has been camping in poll-bound Uttar Pradesh, flexing muscle and gamely playing the field in India's most hotly contested battlefield. And now, after UP Chief Minister Yogi's Abba Jaan comment sparked UP's state of war, Owaisi has been anointed with his own new name by another high-profile player in the state. ओवैसी नाम का इनका चाचा जान है, बीजेपी का चाचा जान, और आ चुका है उत्तर प्रदेश में। उसका सहारा लेंगे, उसको फुल आशीर्वाद है। वो गाली देगा, ये कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। The insinuation couldn't be more direct. That's farm protest leader Rakesh Tikait saying Owaisi is basically hand in glove with the BJP and that the mutual BJP-Owaisi hostility is simply a fixed match to polarize and benefit both. Never one to let a juicy barb go unanswered, here's what Owaisi's party retorted with. 2017 का जो चुनाव था विधानसभा का और 2019 का, इसमें आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे और बीजेपी को जिता रहे थे, और पिछली सरकार को हरा रहे थे, बीजेपी को जिता रहे थे। 2022 के चुनाव में तय हो जाएगा कि राकेश टिकैत साहब बीजेपी की पिच पर बीजेपी के गेंद और बल्ले के साथ खेल रहे हैं। There are still 6 months to go for the UP elections, but campaign heat has already been cranked up high. बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में। The Chacha Jaan bullet has been fired 2 days after Chief Minister Yogi Adityanath lit up the UP battlefield with his Abba Jaan comment. राशन मिलना होगा ना आप लोगों को, राशन मिलना है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। कोई गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। Owaisi, remember, is no stranger to being accused of being the BJP's B team. Several parties, including the Congress, the Trinamool and the RJD, have variously accused Owaisi of the same thing. The BJP, which has fended off the Abba Jaan controversy, is now bemused by the chain reaction it has triggered. ओवैसी किसकी लैला है और कौन उनका मजनू है? अब्बा जान के बाद अब चाचा जान भी आ गए। अब चाचा जान के बाद सारे भाईजान परेशान। क्या आखिर 22 में हम करें क्या? जाएं तो जाएं कहां? ना अब्बा जान साफ कर रहे हैं, ना चाचा जान साफ कर रहे हैं। तो ये लैला मजनू के खेल में भाईजान परेशान। अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। So in 48 hours, we've seen Abba Jaan, बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में, then Chacha Jaan, and now Bhai Jaan erupt in Uttar Pradesh. तो ये लैला मजनू के खेल में भाईजान परेशान। Owaisi has proven to be a politician who relishes polarizing attacks and is certain to make a meal of the fresh assault from Rakesh Tikait. But this time the stakes are sky high. Owaisi has said his party, the AIMIM, will contest 100 out of the 403 seats in the Uttar Pradesh Assembly election, and has said his party is ready to hold talks with the Samajwadi Party and Mayawati's BSP for a possible alliance.
As the war of words intensifies in political Pradesh, don't expect things to cool down anytime soon. Bureau Report, India Today. So it's the uninterrupted Jaans of Uttar Pradesh politics that have been unleashed for voters a full 6 months before voting even happens. But the campaign is already in top gear. Take a look at all the Jaan barbs that have been hurled in just the last 48 hours. राशन मिल रहा होगा ना आप लोगों को? राशन मिल रहा है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। ओवैसी है हैदराबाद से कहीं से आया तो कहा कि बीजेपी का चाचू जान आ गया है, अब इनको कोई दिक्कत नहीं है, इनको फायदा देगा, इनके लिए काम करेगा। जब तक इलेक्शन रहेगा यहाँ पे आएगा, फिर कहीं इलेक्शन होगा, ये चाचू जान बीजेपी का ये परमानेंट चाचू जान है, फिर ये कहीं हो जाएगा। जहाँ जहाँ इलेक्शन जाते हैं उनको फायदा देने का काम करता है। जान के बाद अब चाचा जान भी आ गए। अब चाचा जान के बाद सारे भाईजान परेशान। क्या आखिर 22 में हम करें क्या? जाएं तो जाएं कहां? ना अब्बा जान साफ कर रहे हैं, ना चाचा जान साफ कर रहे हैं। तो ये लैला मजनू के खेल में भाईजान परेशान। योगी जी के मित्र हैं अच्छे, उनकी योगी जी की एक जुगलबंदी चलती रहती है, नूरा कुश्ती चलती रहती है, दिखाने के लिए लड़ते रहते हैं, अंदर पीछे सेटिंग करते रहते हैं। नहीं, मुझे लगा कि आ गया चुनाव। अब चुनाव में सबको अब्बा जान भी याद आएंगे, सबको अम्मी जान भी याद आएंगी। Well, the target of today's Jaan attack of Chacha Jaan was from Rakesh Tikait, aimed at Owaisi. But there's a reason for it, because Owaisi has become one of the high-profile contenders in Uttar Pradesh, but he's also been able to notch up controversy after controversy in what has been a very visible campaign so far. Now, controversy number one, he's referred to Ayodhya as Faizabad. That became a big deal. Controversy number two, an FIR was filed against Owaisi for allegedly insulting the tricolour during a campaign rally in Barabanki. Controversy number three, previous to that, there was another FIR that was lodged against Owaisi for a provocative Hindu Rashtra speech while he was speaking to a crowd in KATRA. Controversy number four, Owaisi has offered a ticket to DON-TURNED-NETA AHMED for the upcoming UP election. And finally, controversy number five, Owaisi's party claims to be in talks with gangster Mukhtar Ansari to probably give him a ticket to fight the election in UP as well. So as far as Owaisi is concerned, this is something he relishes, combative, polarizing politics in Uttar Pradesh. He's going to roll up his sleeves, even though his party has reacted to the jibe from Rakesh Tikait. Owaisi himself, strangely, has not said anything so far, so we're waiting for a reaction from the Hyderabad MP. Meanwhile, as far as polarization Pradesh is concerned, ladies and gentlemen, Ayodhya has become the epicenter in the lead up to this election. After Owaisi, it was the turn of the AAP party to take out a Tiranga Yatra in the holy city yesterday. AAP party leader and Delhi's deputy chief minister also visited the Ram Lalla and the Hanuman Gadi as he promised Hindutva with a difference. Here is Ayodhya becoming once again front and center, the city of this election. The spotlight is firmly on Ayodhya in the upcoming Uttar Pradesh elections. Latest to join the Ayodhya bandwagon is the Aam Aadmi Party, which is making grand plans for the assembly polls. The Aam Aadmi Party took out a Tiranga Yatra in the holy town on Tuesday. One in the long series of yatras it has embarked upon. Large number of Aam Aadmi Party workers have gathered at this particular place, and from this place they will move to the Gandhi Park, Gulab Badi place to Gandhi Park. As you can see, the members, the workers of Aam Aadmi Party reciting Bharat Mata Ki Jai and other slogans in favor of nationalism, and a national flag in their hands and the cap of Aam Aadmi Party on their head. With this yatra, Aam Aadmi Party has signalled its beginning in the elections of Uttar Pradesh.
As the party kickstarts its election campaign, its top leaders, Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia and Member of Parliament Sanjay Singh went on a temple run. Donning traditional gear and chanting prayers. आम आदमी पार्टी अब सॉफ्ट हिंदुत्व बोलिए, हार्ड हिंदुत्व बोलिए, हमारी राजनीति यही है कि दिल में राम रखिए और बगल में संविधान रखिए। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है कि जब चुनाव वगैरह आते हैं या उस समय तो बात तो राम की करते हैं, लेकिन बगल में छुरी रखते हैं, खड़े बलात्कारियों के साथ होते हैं, काम करते हो राक्षसों जैसे और नाम लेते हो राम का। The AAP leader's Ayodhya visit was full of political overtones. मुझे तो नहीं लगता कि कहीं खतरा है। वो योगी जी के मित्र हैं अच्छे, उनकी योगी जी की एक जुगलबंदी चलती रहती है, नूरा कुश्ती चलती रहती है, दिखाने के लिए लड़ते रहते हैं, अंदर पीछे सेटिंग करते रहते हैं। The Bhartiya Janata party, which is taking credit for the Ram temple construction in Ayodhya, is not impressed with AAP's sudden foray. मनीष सिसोदिया और संजय सिंह कालनेमी और मारिच की तरह उत्तर प्रदेश की जनता को ठगने के लिए मंदिर मंदिर घूम रहे हैं और तिरंगा यात्रा और संकल्प यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ की सरकार के साथ है। The political temperature is definitely rising in Uttar Pradesh, and Ayodhya has become the epicenter of it. A few days ago, the AIMIM's Asaduddin Owaisi, during his visit to the town, referred to Ayodhya as Faizabad, the erstwhile name of the municipal district. बोलना शुरू कर दिए कि ओवैसी अयोध्या को नहीं जा रहे हैं। ओवैसी अयोध्या का नाम नहीं लेते हैं। मैंने कहा भाई साहब, अयोध्या भी भारत में है, फैजाबाद भी भारत में है और ओवैसी भी भारत में है। So from Abba Jaan barbs to Ram temple to the allegations of appeasement politics, in Uttar Pradesh, the great vote hunt is well and truly on. With Samarth in Ayodhya, Bureau Report, India Today. Meanwhile, following the Abba Jaan and the Ammi Jaan and all these barbs that are erupting from Uttar Pradesh, Rahul Gandhi has stepped into the Uttar Pradesh battlefield, the very polarizing battlefield, by declaring that the BJP indulges in Dharam ki Dalali. Speaking at a Congress party event, the Mahila Congress event, in fact, Rahul said that while the BJP calls itself a Hindu party, it attacks Goddess Lakshmi by weakening the economy and Goddess Durga by weakening women, accusing the BJP and RSS of fake Hindutva. Rahul also said that the BJP and RSS have never made a woman the Prime Minister. Remember, Rahul's Hindutva attack comes just months before the Uttar Pradesh election and appears to be in direct response to the Abba Jaan controversy sparked by Chief Minister Yogi. But Rahul himself has been known to invoke soft Hindutva from time to time, from declaring himself a Janayudhari Brahmin to temple hopping to his latest being a visit to the Vaishno Devi in Jammu and Kashmir, where he reclaimed his Kashmiri Pandit identity. But first, listen into what Rahul Gandhi said today. बीजेपी के लोग कहते हैं कि वो हिंदू पार्टी है, तो अगर महात्मा गांधी ने हिंदू धर्म को समझा और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हिंदू धर्म को समझने में लगा दी, तो आरएसएस की विचारधारा ने उस हिंदू की छाती में 3 गोली क्यों मारी? वो अपने आप को हिंदू पार्टी कहते हैं और पूरे देश में लक्ष्मी और दुर्गा पर आक्रमण करते हैं। जहां ये जाते हैं, कहीं लक्ष्मी को मारते हैं, कहीं दुर्गा को मारते हैं और फिर कहते हैं हम हिंदू हैं। ये किस प्रकार के हिंदू हैं? ये झूठे हिंदू हैं। ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं, ये धर्म की दलाली करते हैं, मगर ये हिंदू नहीं है। पुनः हिंदू
धर्म की भावनाओं को आहत किया है। मां लक्ष्मी, मां दुर्गा, मां सरस्वती करोड़ों लोगों के भावनाओं के केंद्र हैं। भगवानों को राजनीति के बीच में लाना, उनके विषय में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जो अनुचित है, ये कहना कि देवी की शक्तियां क्षीण हो गई, देवी की शक्तियां कम हो गई, ये कहना कि देवी मां हार गई और ये कहना कि दुर्गा जी के ऊपर आक्रमण हुआ, मुझे लगता है ऐसे शब्दों का प्रयोग किसी भी धर्म के लिए करना ये अनुचित है। मुझे आश्चर्य होता है कि जहां तक कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी हैं, उनको हिंदू धर्म से इस प्रकार का वैमनस्य क्यों है? क्योंकि ये वही कांग्रेस पार्टी है जो भगवान श्री राम के अस्तित्व में विश्वास नहीं करती है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो हिंदू आतंकवाद जैसे घिनौने शब्द का प्रयोग करती है। और आज इस प्रकार कहना धर्म की दलाली, कौन धर्म की दलाली करता है? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विश्वास करती है। याद करिए, यह वही राहुल गांधी है जिन्होंने खून की दलाली जैसे शब्द का प्रयोग हमारे वीर जवानों के लिए किया था और आज हिंदू धर्म के लिए धर्म की दलाली जैसे शब्दों का प्रयोग वो कर रहे हैं। भगवान शिव के हाथ और महावीर जी के हाथ में उन्हें कांग्रेस का हाथ नजर आता है। मुझे लगता है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार की राजनीति जिसमें देवी देवताओं का अपमान हो कदाचित नहीं करना चाहिए। माफी मांग। And remember, the Dharam ki Dalali comment by a very aggressive Rahul Gandhi is actually an echo of previous comments that have been made by himself and his mother that sound very similar, very derivative comments coming down to Dharam ki Dalali now being said 6 months before the UP election. Take a look. Reminder of these. पूरी जिंदगी गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे बेईमानी, डर और मौत के सौदागर हैं। जो हमारे जवान हैं जिन्होंने अपना खून दिया है, जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। ये झूठे हिंदू हैं, ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं, ये धर्म की दलाली करते हैं, मगर ये हिंदू नहीं है। And Mausami Singh, who has covered each and every one of those instances, is with me live. Mausami, Maut ke Saudagar, Khoon ki Dalali, and now Dharam ki Dalali. You know, putting the substance of what Rahul Gandhi is attempting to say aside, because we are after all in the heat of a big political do-or-die campaign for Uttar Pradesh, and it appears that the Abba Jaan controversy is the immediate trigger for what Rahul Gandhi has said today. We both know that this is a pretty slippery slope. You know, as far as Congress BJP politics has been in the past, Mausami, how do you see this playing out? Because on cue, the BJP has already latched on to this comment and said, you are insulting Hindus. Absolutely, absolutely, Shiv. Sorry for that. Absolutely, Shiv. A very slippery slope, and the Congress party has slipped many times. Yeah. If you see each and every comment that was made in the past, whether it was Sonia Gandhi or Rahul Gandhi, how it had acted as a catalyst to swing votes in the favor of the BJP. And here, you know, Rahul Gandhi making that point after a trip to Vaishno Devi, he did in fact go a step further, because in Jammu, he did call the BJP and Prime Minister Narendra Modi fake Hindus. But here, right at the AICC headquarters, making that comment in the national capital has multiple repercussions, and clearly the BJP has latched on to that comment. And if you look at the entire overview of the comment that has been made, one thing is clear, Shiv, that yet again the political discourse has gone back to the polarizing Hindutva or non-Hindutva or soft Hindutva issue before the upcoming assembly elections, which are very crucial, and it's anybody's guess who it will benefit. Incredible. I mean, it's something that we've seen happen so many times in the past. It has never delivered any political returns. It's a territory that the BJP is overly familiar with, and it appears that Rahul Gandhi, and I'm only speaking purely politically here, appears to be walking into that trap once again. Mausami, thank you very much for joining me on that breaking story.
And from the Battle of Uttar Pradesh to the battle for Bhawanipur, the big prestige bypoll that Mamata Banerjee must win in order to remain the Chief Minister of Bengal. The champion of Bengali pride is going all out to woo non-Bengali voters of Bhawanipur. The West Bengal Chief Minister visited a Gurudwara in the constituency today where she interacted with the Sikh community. Mamata's visit comes after her challenger from the BJP, Priyanka Tibrewal, too visited the same Gurudwara just hours before her. Tibrewal also went to a temple in the area and offered prayers. Interestingly, Bhawanipur has a 40% non-Bengali voter base as the constituency is primarily home to Marwaris, Gujaratis, Sikhs, Biharis and Punjabis. The seat also has a sizable population of Muslims who hold a key to the victory. पंजाब का इतिहास हमारा बंगाल से जुड़ा है और बंगाल पंजाब का साथ रिश्ता आजादी का दिन से है। ये नया कोई बात नहीं है। अब जब कविगुरु रविंद्रनाथ ठाकुर ने नेशनल एंथम लिखा था तो उन्होंने शुरू किया था पंजाब से। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगो, पंजाब से शुरू करके बंगाल ने आके खत्म किया था। इसी के लिए अगर पंजाब बंगाल नहीं रहता तो आजादी का इतना लड़ाई में भाग लेने के लिए इतना हिम्मत किसी का नहीं था। You've also been going to the temple. This is your constituency. What do you think is going to play out here? See, first of all, I'll tell you, I do not look at it like going to a mandir, going to a masjid or going to a gurudwara for votes. No, it has to be within you. I am a Hindu in all beliefs and I believe that a gurudwara, a mandir or whatsoever it may be, it is all. God is present everywhere. Now, it is about those people who only choose to visit the gurudwaras and the mandirs during election and not otherwise. She has gone to the masjid. She continuously goes to the masjid. She never goes to the gurudwara. It is just because of the election she remembers the gurudwara.